बात करते हैं कि Faiza, growing up, what was your first crush? Tell me. That best friend that I bullied. हाँ. That was my first crush. उसको उसी bully करी. इसीलिए bully कर रही थी. हाँ. वो तो वैसे ही भाग रहा है, वो भागेगा तुमसे, उसको फिर crush है तो उसको bully भी कर रही थी. बाद में crush होना जब अफसोस हुआ मुझे अपने behavior पे. फिर तो उसने माफ किया. एक वो भी फेज आया था, बहुत बता रही हूँ ना कि when you realize if you're not a completely horrible person, you realize कि यार ये नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये बुरी चीज़ है. तो वो फेज भी आया था, तो वो फिर वो जो कि जिंदगी भर चला. तुम्हें अच्छा लगने लगा. क्यूट लगने लगा. क्यूट. हाँ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. मेरी बेस्ट फ्रेंड दूसरी वाली थी ना, उसको भी बहुत पसंद है, तो हम दोनों we were okay with that. No, we were both okay with that. जिसको मिल जाए. किसी को चाहिए भी नहीं था. क्लास 3 में थे. क्लास 3. Okay, उसके बाद चाहिए किसी को नहीं था, लेकिन क्लास 3 में bullying, that's okay. अब उसके बाद बिल्कुल बचपन की बात बता रही हूँ. तो बिल्कुल ही young एज होती है. उसके बाद क्रशेस वगैरह तो कम ही हुए. फिर relationships नहीं. She's looking at she's a freaking stand-up comedian. And are you a stand-up comedian? Yeah, I'm a stand-up comedian. अभी हम यही बात करते हैं. I do stand-up, but I do improv more than stand-up. But वो सारी चीजें stand-up के ambit में आ जाती हैं. And she stands up for body shaming, and she stands up for ageism and colorism and all of that. And yet she doesn't want to talk to me about her relationships. बस my relationship is my शादी. हाँ, तो वो ही बताओ. वो भी सुना है बड़ी मुश्किल से. हाँ, तो मानी हो. सुना है कि वो भाग रहा था तुम्हारे पीछे. Is it true? नहीं, भाग नहीं रहा था, लेकिन I think it came as a surprise to both of us. And he's always been the one who said कि नहीं, we'll make it work till the very end. Friends थे पहले. Best friends थे. Best friends बने. Then थोड़ी बहुत पसंद आने लगा. फिर उसके बाद मंगनी कर ली. I jumped to मंगनी. नहीं, और फिर तुमने स्नीकर्स पहने हुए तो भागने वाली थी शादी से. हाँ, मैं असल प्लान ये था. Guys, मैं गई थी शादी में. She knew के यही प्लान है. तो भाग जाएगी, तो runaway bride है. और सुना तुमने अपनी रोस्ट भी करवाई थी, सुना. हाँ, मैंने रोस्ट करा. How do you do that, man? Oh, you were there at the roast. I was there, not on the. I think I was there on the शादी. You were there on the शादी, but I must have told you about the roast. Yeah. So I got roasted pretty well. Yeah. My friends. Was that your idea? It was my idea to get roasted on my शादी. वो शादी पर dances नहीं हो रहे थे? वो भी हुए. So we did a separate comedy night where I also performed at my शादी की comedy night. I performed with my troupe and my friends who were also comedians. They made fun of me and I enjoyed it. So मेहंदी के जोड़े में? नहीं, वो अलग से थी. वो अलग था. The मेहंदी was separate. Guys, she's organizing the next weddings for me. I love this idea. Yeah. I come up with lots of fun things. You can't sit and just stage लोगों के लिए बोरिंग होता है ना. मैं स्टेज पे बैठ और वो कितनी देर देखेंगे. जमा कर और यूं करके झुके हुए और सब आंटियों के साथ तस्वीरें खिंचा. But पता है फ्रिया, एक चीज important है. A lot of times people ask us to perform at weddings, लेकिन weddings के ऊपर ना perform करना is not a great idea because people are busy like looking at each other's जोड़ास and talking to each other about the शादी and शादी का खाने. उनको रोस्ट करो, अलग से लेकिन होना चाहिए. एक कॉमेडी नाइट अलग से होना चाहिए where people it was completely like a संगीत just separate from the other events. तो इसी तरह की comedy night where people know they're coming in. People used to do this, Faiza, जब एक variety shows होते थे शादियों के से पहले, उसमें singers आते थे, बीच में आते थे, comedy होती थी, उसके बाद फिर से singers आते थे. I remember this. I think मेरी बहन की शादी पे भी ऐसा कोई function हुआ था जरूर. I know that. And we used to call them variety shows. Variety shows. Okay. And then people started thinking variety shows are cheap. Okay. Comedy में यही बड़ी fine line तो होती है ना. Yeah. So I think, but it depends on the exactly कि quality क्या है. Quality क्या है. अब आप क्या आतिफ असलम को बुला रहे हो या आप I'm not gonna take names. हाँ, मैं समझ गई. You know what I mean? किसी छोटे singer को बुला रहे हो. Depends ना. छोटा is also not the problem. I think caliber देखना पड़ता है because बच्चे भी हैं, बड़े एज के भी लोग होते हैं. You can't get away with like vulgar. No, but वो dances भी होते थे ना बीच में. हाँ, तो वो अच्छा है, वो अच्छा. लेकिन I think अभी लोगों के अंदर इतना attention span नहीं है कि वो पूरा comedy show देखें. खुद dances होते. अब खुद डांस करने उस जमाने में तो लड़कियां को allow नहीं था ढोल बजा के. सिर्फ आप ढोल बजा के गाने नो करते थे लोग, डांस नहीं करते थे. अच्छा, there was no dances. No, I mean होते थे but segregated. लुडियाँ होती थी. Okay, nobody was doing like this full Umrao John thing or whatever, this Bollywood thing. No one did you that. You were quite ahead of your time. Who, me? Yeah. Why? Did you see me dancing somewhere? No.
No, I didn't. I see you The only thing I dancing. did was मोड़ तोड़ टिल्ले डाना. That's a folk dance, यार. No, I'm not saying I saw. मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें असली बात बता रही हूँ कि मैं जब कह रही हूँ ना कि मैं जब दीना दिल पसीर के साथ compete नहीं कर सकती थी. Because I had no training. The only thing I'd seen is people dancing and stuff, and then you would do this मोड़ तोड़ टिल्ले डाना type thing. और बस ये कर सकती थी. I mean, अच्छी घराने की लड़कियाँ जो थीं वो सिर्फ ये कर सकती थी. That I remember, but I'm saying like you were ahead of your time, right? Like the clothes that you wore, you were always so stylish, you were always so on point. So how did you get उस time अब करना अब भी करना like some of the pictures that I see, they're super hard. I think अब भी कोई करे तो लोगों को मसला अब ज़्यादा मसला है. अच्छा अब ज़्यादा ही उसे अच्छा उस टाइम पे कम था क्योंकि उस ज़माने में अगर मैं अपने ज़माने से भी पिछले ज़माने पे चली जाऊँ जैसे कि my parents supposing when they got married and they were young तो उनके ज़माने में तो माहीन मुझे बताती हैं she was a model in the 60s right so they used to cycle to Clifton in shorts and you had a huge foreign community that was left over आफ्टर पार्टीशन के बाद बहुत सारे रह गए थे गोरे पीछे क्लब्स वगैरह जो आपकी जिमखाना और ये सारे जो क्लब्स हैं आपके और उसके साथ फिर आपकी कैबरे नाइट्स होती थी यहाँ पे और टर्किश परफॉर्मर्स आते थे एंड यू वुड हैव फुल फ्लेज्ड स्टफ गोइंग ऑन एंड इट वाज वेरी कूल. इट वाज टुवर्ड्स आई थिंक ज़ियाउल हक के एरा के बाद से I started seeing the change in Pakistan because Pakistan started getting very conservative and it wasn't that. Now, obviously मैं तो ज़ियाउल हक के ज़माने में आई थी तो I think हमारा जो ज़माना था फैशन और जो बॉय बैंड्स और जिनके साथ मैंने काम किया है ना like Vital Signs और जुनून और so we were rebelling. We were definitely rebelling against that whole regime and the people stopping us from doing whatever we were doing. So I think that was our era. But before that, the Bhutto's time, before Bhutto's like assassination time, it was very cool. It wasn't like the way it is. That's what I've heard. Yeah. First hand सुनना. I mean, I'm saying it's cool. People might not think it's cool. लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि पाकिस्तान में बहुत चेंज आया और बहुत लोग इस तरह नहीं सोचते थे जिस तरह आप सोचते हैं. So it's tougher now. I think it's tougher in certain ways. Obviously उस ज़माने में ये भी होता था कि baby boomers and all, everybody was married before 20. ये भी होता था. Right? कि आपकी certain उम्र से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए. Right? You're straight out of teenage. Before in your teens. Okay? And it was considered normal कि आपकी my sister got a रिश्ता in 13 years of age. हाँ चिट्टी गोरी थी, blue eyes थी, सबको अपनी नस्ल से ही करनी होती है. This is what it is. Right? This is what it is. Right? This is how they look. I mean, I was the black sheep of the family. Right? I mean, sister was Gori Chitti with blue eyes, so you start rebelling from that age, young age. Okay, but this is not about you. You're doing this on purpose. She's turning me away from the I did a little bit of charaki there. Little romantic interlude with the husband. Yeah. No, so what was... So then it evolved, I think the friendship evolved into love and I think it keeps evolving into deeper love with time. Right, if you understand each other. I'm very open with communication. So मुझे जो चाहिए होता लाइफ से मैं बता देती हूँ. जो नहीं चाहिए होता. Cool. He's chill. He loves you for who you are. Yeah, best friends. Every phase. I've been through so many phases in my life. I'm like that as a person. I have a lot of phases. I mean, come on. You would run over. You would never marry somebody जो होगा मेरी तो शादी में मुझे रोस्ट होगा मेरी शादी में मैंने स्नीकर पहनने हैं. Mother-in-law school also कि वो भी सब चल रहा है. My mother-in-law is very nice. Like वो खुद भी पता है कि वो खुद भी modern है. उनकी खुद की अपनी life है. She has a nice balanced life. Socialize करती हैं. Walk भी करती हैं अपनी अपना fitness का भी ख्याल रखती हैं. She's busy with her life, so she doesn't meddle in mine. तो वो बहुत important चीज़ होती है. So वो लेकिन मैं देख के की थी शादी. Of course.